Hello students, I am Archana Tripathi, lecturer Computer Science and Engineering from Government Polytechnic Bhubaneswar. Today I will discuss about network security and VPN, that is chapter 7 of subject cryptography and network security. Network security and VPN contains brief introduction to TCP/IP, firewall, IP security, VPN, that is virtual private network. So first we will discuss what is network security. Network security कौन आमे बुझिबाकू चेष्टा करिबा. Network security deals with all aspects related to the protection of series of sensitive information asset existing on the network. Network रे आमे जतले डाटा ट्रांसमिशन करूचे हमर बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन आमे ट्रांसमिट करचे सेथि पई ताकू प्रोटेक्शन रखिया पई वी आर यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी to cover various mechanisms developed to provide fundamental security service of data communication. Then we'll go introduction to TCP/IP. TCP/IP means Transmission Control Protocol. IP means Internet Protocol. A complete understanding of TCP/IP is essential in context of network level security. जेतले हमें network level security देखिया बुझिबा को जाउचे तेणु करी हमको TCP/IP जानिबा निहाती दरकार. The TCP/IP model contains 5 layers, that is application layer, transport layer, network layer, that is internet, data link layer and physical layer. This is the TCP/IP model. So here we will know the significance of the layer. Data unit initially created at the application layer by an application such as email, web browser is called as message. आमे जानी छे जतले डाटा ट्रांसमिशन होची गोटे डाटा पैकेट है कि डाटा ट्रांसमिट हुए सो सेटा इनिशियली क्रिएट हुए कोठी एप्लीकेशन लेयर रे. Message is actually broken into segment by the transport layer which contain two protocol TCP and UDP. Transport layer रे message ता हमरो फ्रैगमेंट हे जाय तार तो सेगमेंट हे जाय और को प्रोटोकॉल यूजर TCP and UDP. UDP means user datagram protocol. TCP is more often used, प्राय यूज करा जाए TCP. Transport layer then adds its own header to the segment and give it to the network layer. Transport layer करी निज own header गोटे ऐड करी network layer को ट्रांसमिट करे. Then network layer adds IP header to the block and give it to the data link layer. Network head तार निजर IP header ऐड करी data link layer को ट्रांसफर करे. Again data link layer गोटे फ्रेम ऐड करी physical layer को डाटा ट्रांसमिशन करे. At physical layer actual bits are transmitted at voltage pulses. Means आम physical layer जतले डाटा ट्रांसमिट होची सेठी voltage pulse transmission होची. An opposite process happens at the destination end where each layer remove previous layer of layers header. That means आमे जतले डाटा ट्रांसमिट करछि फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीवर एंड सेटा पांचटा लेयर देकी डाटा ट्रांसमिशन एप्लीकेशन लेयर रो स्टार्ट होची लास्ट होची फिजिकल लेयर. अगेन रिसीवर एंड रे से जहा आईपी एड्रेस हेडर फ्रेम सब ऐड हेतला सेटा डेटा छे जाय कि अल्टीमेटली फाइनली एप्लीकेशन लेयर रे ओरिजिनल मैसेजटा डिलीवर करिवो. TCP segment. TCP segment consists of data byte to be sent and header that is added at the data byte by TCP. The header of TCP segment can range from 20 to 60 byte, 40 bytes for option. If there are no option, header is 20 byte, else it can be upward 60 byte. Then IP datagram format. IP, the format of data that can be recognized by IP is called IP datagram. Means IP जो फॉर्मेट रिकॉग्नाइज करे ताको IP डाटाग्राम फॉर्मेट कहा जाए. It consists of two components, namely header and data, which need to be transmitted. Every field in the IP datagram has a fixed size except for the IP option field, which can be 20 to 60 byte in length. Note: maximum IP datagram size is 65,535 bytes. minus 20 bytes for IP header. So 20 bytes store करा जाए IP header पे. Rest रहिला 65,515 bytes left for the data. Now we'll discuss about what is firewall. Firewall is a network security device, either hardware or software, based on which monitor
all the incoming and outgoing traffics, and based on defined set of security rule it accept, reject or drop that specific traffic. That means firewall गोटे barrier परी काम करे जेतेबेले आमे for example this is internet, this is our private network, ए private network को आमे data transmit करछि internet को, internet to data transfer होछि private network को. So किछि जदि अनऑथराइज अनवांटेड पैकेट आसिला ताहले ए फायरवॉल कौन करिवो ताकू इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट को चेक करिवो. जदि ऑथराइज हैला देन इट विल बी पास, और जदि अनऑथराइज हैला देन it will be rejected. Accept, allow the traffic, reject, block the traffic but reply with an unreachable error, drop, block the traffic with no reply. So firewall monitor and controls incoming and outgoing traffic based on predefined rule. So firewall जेतबेले आमे इंस्टॉल करूचे आमे गोटे प्रीडिफाइंड रूल सेटअप करूचे को आईपी एड्रेस को सोर्स पोर्ट को आमे ब्लॉक करिबा. सो से रूल अनुसार डाटा पैकेट्स गुरा हमर चेक हुए, मीन्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिकटा चेक हुए. It checks all incoming packets and outgoing packet. It decides which packet need to be transferred or not. So it acts like a barrier between internal network, trusted network. Trusted network means our own network, and external network means internet or private network. For example, the security person checks the baggage and then send through a scanner. Similarly, firewall checks the packets. For example, देखा आमे जतले एयरपोर्ट रे जाउचे आमे आमर बैगेज गुड़ा स्कैनर थ्रू स्कैन होकि जाउची. कहीं होची जदि किसी सस्पेक्टेबल जिनस अच्छी देन आमको सिक्योरिटी पर्सन सेठी हमको ब्लॉक कर दउचंती, आमे आगो को प्रोसीड करि परिबा नाही. सो सेमती फायरवॉल कौन करे चेक करे आम पैकेट्स गुड़ा को, जदि ऑथराइज्ड अच्छी देन इट विल पास, अदरवाइज इट विल बी ब्लॉक्ड. एबे आउ गोटे एग्जांपल नबा आम इंस्टीट्यूशन रो. Let us take another example. In our institution we have only one entry gate. So this entry gate आम institution रो गोटी अच्छी, से entry gate थ्रू रे आमे बाहर भीतर को एंट्री करि परियो. सो एंट्री गेट थ्रू रे गोटे ऑथराइज कि अनऑथराइज पर्सन भी एंट्री करि परियो. जदि अनऑथराइज पर्सन एंट्री कला ताहले कौन प्रॉब्लम हो, सी किछि मिसअप आम प्रीमिसेस भितर करि पारे. तेणु करी आमे गोटे सिस्टम गेट पाखरे रखिबा जोटा कि प्रोटेक्ट करिवो आम इंस्टीट्यूट को किसी मिसअप हवाटू. सो आमे सिटी किछि गोटे सिस्टम डेवलप करिबा जोटा कि आउ एक अनऑथराइज पर्सन एंट्री करि पारे. सिमिलरली फायरवॉल इन ए नेटवर्क एक्ट्स लाइक ए बैरियर टू टेक द अनवांटेड पैकेट्स. सो नाउ होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल. होस्ट बेस्ड होची गोटे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होची गोटे हार्डवेयर बेस्ड. सो एटा आमे पीसी रे आमर ऑपरेटिंग सिस्टम रे थ्रू कंट्रोल पैनल जे सेटअप करि परिबा. एथि पई आमे एटा हार्डवेयर नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल कोठी इंस्टॉल हुए जोठी बड़ बड़ कंपनी रहिचनी से माने डेडिकेटेड गोटे हार्डवेयर इंस्टॉल करंती फॉर फायरवॉल. This is the diagram of the firewall. This is a private network and this is internet. So LAN is internal network and one is external network, that is public network, which is untrusted system. So trusted system our own people mu agru kahichi, untrusted people hela outside from the internet who are the vulnerable to our system. Anyone who may be threat to our system, they should not enter directly or directly log in into allowed. They go through the security barrier which is called as firewall. जो भी data हम transmit हबो from private to public, all are go through firewall. So there are two types of firewall: packet filter firewall and proxy firewall, that is application gateway. Packet filter firewall कोड काम करे physical layer, data link layer, network layer and transport layer of TCP/IP. Proxy firewall कोडी काम करे, it checks data in the application layer. The packet filter firewall. Packet filtering is a firewall technique used to control network access by monitoring outgoing and incoming packets and allowing them to pass or halt based on the source and destination, internet protocol address, protocol and ports. So basically it is a technique जो through रे हमर incoming outgoing packet गुड़ा check हुए, filter हुए.
What packet filter firewall does? It checks the IP header, TCP header. Basically, all packets will have IP header, TCP header. So packet filter कौन करे? IP header and TCP header को check करे. In TCP header, it checks the port number. In the IP header, it checks the IP header, IP address. It works on network layer and transport layer. We can block an IP address which we don't as well as full network. We can also block a series सर्विसेस लाइक HTTP एंड FTP. जदि आमे किसी IP एड्रेस को परमिशन दौने तो आमे ताको टोटली IP एड्रेस को ब्लॉक कर देवा अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी, और अदरवाइज विल ब्लॉक टोटल नेटवर्क. Here we can prepare or implement a default allow policy. Default allow policy means we will allow everyone except those IP address are mentioned in our default allow policy. आमे समस्त को allow करिया, किंतु जो IP address टा mention करा जायछि default allow policy रे आमे सेमान को allow करिबा नहीं to enter our private network. Let us take an example. रूल नंबर अच्छी, सोर्स आईपी अच्छी, पोर्ट नंबर अच्छी, डेस्टिनेशन. सो एमती किछि आमे नैचे नंबर गुडा गोटे एग्जांपल नैचे. एनी मीन्स एनी. सो एठी गोटे नंबर नैचे, एठी गोटे नंबर. सो ए जो नंबर असाइन हिछि एमाने अलाउ हेबे नाही एज पर डिफॉल्ट पॉलिसी. फर्स्ट रूल ऑन फॉर एग्जांपल आमर इंटरनेट आमर आईपी एड्रेस है क्लास बी आईपी एड्रेस है 172.0.0.0. if rule number 1 answer, if any packet arrives with source IP 179.2.4.80 means the IP is from outside. कारण आमर IP एड्रेस होची 172.9.0.0. सो एटा जे ताठू अलग अछि. सो 179.2.4.80 को आमे ब्लॉक कर दबा काहे कि आम डिफॉल्ट पॉलिसी रे सेटा असाइन कराइछि. सो this IP address will be totally blocked. से IP address को कई जदि रिक्वेस्ट पठुचे सेटा ब्लॉक हे जिवो. सेकेंड रूल अनुसार if source IP is 152.32.0.0 that is class B IP ताहले टोटल नेटवर्क टा ब्लॉक हे जिवो, कारण एटा गोटे केही आउटसाइड प्राइवेट नेटवर्क रो रिक्वेस्ट पठौची. जदि भी से सीरीज रे किछि IP आसिला सेटा भी टोटली ब्लॉक हे जिवो. आउ गोटे हला रूल नंबर 3 अनुसार डेस्टिनेशन आईपी जदि 172.9.0.3 है देन देर द यूजर मस्ट बी फ्रॉम इंटरनल नेटवर्क. कहीं आमर आईपी एड्रेस थिला 172.0.0.0. सो इटा मस्ट बी फ्रॉम आवर इंटरनल नेटवर्क. सो ये किसी चाहूँगी आमर भाइटाल इनफॉरमेशन को हैकिंग करके बाहर को ट्रांसमिट कर. सो आमे चाहिए इटा को आमर ब्लॉक कर दे पारिबा. If the source port is 80, that is HTTP service used to access web page. Here we will block total HTTP service because someone is sending request through HTTP whether from internal network or external. So 80 को हमें ब्लॉक कर दे कहीं एटा गोटे HTTP सर्विस कहीं यूजर ताकू आउटसाइड इंटरनेट रू इंटरनल नेटवर्क को डाटा ट्रांसमिट करछि और वाइस वर्सा होउछि जोटा कि आम पई गोटे थ्रेट. If we will block the HTTP service, we cannot use the web service like HTTP, Telnet, FTP. All will be blocked by packet filter formula. If the destination port is 21, that is FTP request. For example, a user from internal network is transferring file to external network through FTP. This can be blocked and vice versa. So FTP through रे किए जदि डाटा ट्रांसमिट करिया चाहूँची फ्रॉम इंटरनल नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क एज वेल एज एक्सटर्नल नेटवर्क टू इंटरनल नेटवर्क ताहले आमे इटा को ब्लॉक कर दबा. देन प्रॉक्सी फायरवॉल और एप्लीकेशन गेटवे. इट चेक्स द डाटा इन एप्लीकेशन लेयर व्हिच इज द लास्ट लेयर ऑफ TCP IP. Here header and data are scanned and check the data whether the received data is malicious or not. So ए प्रॉक्सी फायरवॉल कौन हुए हेडर एंड डाटा स्कैन हुए और चेक करे जो डाटा हमें रिसीव करचे फ्रॉम सेंडर साइड रो whether it is malicious or not. That means username and password. Nowadays we are using online services where we assign our username and password. All goes through the HTTP protocol with SSL, that is secure socket layer. In SSL the username and password is encrypted and passed.
सिक्योर सॉकेट लेयर आमर जहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड दौचे सेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म रे ट्रांसमिट होची। तो वर्किंग ऑफ प्रॉक्सी फायरवॉल, data packet first go to network firewall, it checks and scan the IP address, port address, then it will be transported to the net. ए देखो diagram रे internet रे आसिला, first this will checked here firewall, then it is checked here proxy firewall, then the data will transmitted to the system. The proxy firewall checks the username and password whether the username and the password are authentic or not. If the username and password are valid, authentic, then the user are allowed to access our web application database and server. जो proxy firewall check करिबो जदि username और password authentic अछि, then it is allowed to access our database or web application. If the username password is invalid, then the proxy firewall will stop the request from the user. जदि invalid बाजला किछि mismatch हैला ताहले it will be totally rejected for the user to access the system. If the username and password are valid, a session will be assigned. Through that secure session, the user can access. जदि वैलिड है देन से यूजर को गोटे सेशन असाइन कराब से थ्रू से तार जहाँ काम करिया कथा एग्जीक्यूट करिवो। Lastly, deep scanning takes place there whether any unwanted packet are inserted and trying to deliver within our series of packet. Immediately firewall drops that unwanted packet. For example, आमर series of data जाउची 1 to 10 पैकेट ट्रांसमिट करछि किंतु ता भितर किछि अनवांटेड पैकेट दैट इज 1001 1010 1020 एमती इंसर्टेड है मीन्स दीज आर अनऑथराइज्ड पैकेट। सो इमीडिएटली प्रॉक्सी फायरवॉल कौन करिवो सेही अनवांटेड पैकेट को आम सीरीज ऑफ पैकेट थ्रू डिस्कार्ड करि देबो। फायरवॉल इज यूज्ड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। Then IP security, that is most important. IP security is an internet engineering task force standard set of protocol between two communication points across the IP network which provide data authentication, integrity and confidentiality. It also defines the encrypted, decrypted and authenticated packets. So IP security amar nihati darkar for our data authentication, integrity and confidentiality. Then application, secure remote internet access, secure branch office connectivity, set up communication with other organization. Advantages है IP security is transparent to end user. IP security works at network layer. When IP security is implemented in the firewall or router, all the outgoing incoming traffics get protected. जदि IP security आम install करिछे अच्छी आमर, then our data packets are fully protected. IP security allows interconnectivity between branches, offices. Cost is very less. Now we'll discuss about what is VPN. VPN means virtual private network. Creates a secure network connection over a public network, or within public network we can create our own network. That means by using network internet we can create our own private network for security reason. Even if by using our public network आमे आमर own private network ता भितर create करी पारिबा। एटा जेमती create हेची public network by using that, this is local network, this is not, this is public network. By using that public network we have created our VPN. This is the VPN basic architecture. Now we'll discuss how VPN works. The VPN is a secure way of connecting to private local area network. VPN is the best way to connect our private area local area network. Using the internet or any unsecure public network to transport the network data packet privately through the encryption process. VPN ने जतले हमें डाटा ट्रांसफर इन गोटे अच्छी आउट गोटे अच्छी सो इन हैला बेल को सेटा एनक्रिप्टेड प्रोसेस से डाटा ट्रांसमिट करे एंड डिक्रिप्ट करे आउट प्रोसेस किंतु सेटा जेहेतु एनक्रिप्टेड प्रोसेस रे जाउची आमो पई मोर सिक्योर काहेकि ना थर्ड पार्टी केही ताको रीड करि पारिबे नाही। द VPN uses authentication to deny access to unauthorized user and
encryption to prevent unauthorized users from reading the private network packet. जेहेतु encrypted है कि डाटा ट्रांसमिट करे VPN रे तेणुकरी कौन से अनऑथराइज्ड यूजर ताको एक्सेस करि परिबे नाही. The VPN can use to send any kind of network traffic securely, including voice, video, and data. VPN keys are strongly protected with length and encoding, which makes it impossible to be understood by the third party. Only the VPN server knows the key to properly handle the further. So VPN key गोटे आमर एते तमर create कराइछि जो which is more secure. Now I'll discuss about the types of VPN. There are three types of VPN: intranet VPN, extranet VPN, access VPN. Intranet VPN means same office connection. That means head office connected with the branch office through VPN. Head office connected hoba amaro कोनसी branch office सहित with through VPN. Extranet, your office and your partners or suppliers office connected through VPN. means आमर ऑफिस कोनसी जदि आमर पार्टनर ऑफिस सहित कनेक्टिविटी रखिया चाहूँ थ्रू VPN, it can also establish. Access VPN, head office can be connected with mobile employee of same office who works in the remote area through VPN server. आमर head office भुवनेश्वर रे थिले भी आमर केते एम्प्लॉय मोबाइल ऑफिसर माने अछन से माने काम करूछंदी आउ केते ऑफिसर अछन रिमोट एरिया रे काम करछ से माने जदि एक्सेस करिया को चाहिबे फाइल ट्रांसफर करिया को चाहिबे टू हेड ऑफिस कि हेड ऑफिस चाहिबो ताको फाइल ट्रांसफर करिया दैट कैन आल्सो पॉसिबल थ्रू एक्सेस VPN. And they can use the VPN server. Advantages of VPN. The VPN service hides your real IP address, effectively masking your online identity, extends geographical connectivity. Since VPN marks your IP address, it also helps you bypass the firewall. जेहेतु आमर IP address को सी गोटे प्रोटेक्टेड एनकोडेड फॉर्म रे ट्रांसमिट करूची डिक्रिप्ट करिकी तो आमे चाहिए बाईपास करि परिबा फायरवॉल को. A VPN encrypts your online connection, protecting your data from hackers and various surveillances. Then disadvantages of VPN. Some common disadvantages of VPN services are a slower internet connection, specific blockage of VPN services, for example Netflix, illegal use of VPN themselves, not knowing how strong the encryption provided by our VPN. Connection breaks. This is important. Connection breaks means once VPN channel through the data transmission stop होइला कोनसी कारण ब्रेक होइगला सही टाइम रे our IP, our data, everything will be open to all. That is anybody can access that packet and the IP address. These are the assignment questions. Define TCP/IP. This will 2 mark. Explain TCP/IP protocol suite. That is 6 mark. If what is firewall? 2 mark. Only it is the we will write the definition here only. What are the function of packet filter firewall? Packet filter function जहाँ कही इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट गुड़ा को फिल्टर करिबो से विषय तुम टिके डिटेल लिखिबो. What do you mean by firewall? What are the different types of firewall? So 2 types of firewall मु कहली proxy packet filter firewall and proxy firewall, that is application gateway. तारा डायग्राम सहित डिस्क्राइब करे. इरा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क रो. व्हाट डू मीन बाय IP सिक्योरिटी? IP सिक्योरिटी 2 मार्क. तेणु करी एठी आमे एठी खाली ओनली डेफिनेशन ता लिखि परिबा. व्हाट आर द एप्लीकेशन एडवांटेजेस ऑफ IP सिक्योरिटी 6 मार्क. तो एठी आमे बोथ एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन को लिखिबा. डिफाइन VPN. VPN कोन तार फंक्शन कोन आमे एठी लिखिबा. दैट इज ओनली 2 mark. What is VPN? Explain types and how VPN works. इटा 10 mark गोटे लॉन्ग क्वेश्चन. VPN कोन तार डेफिनेशन लिखिबा तार डायग्राम करिबा एंड एक्सप्लेन टाइप्स जो इंटरनेट एक्सट्रानेट एक्सेस VPN कहितले सेगुडा सब तुम लिखिबो एंड हाउ VPN वर्क्स द स्टेप बाय स्टेप केमती से काम करूची. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज बाय VPN? दिस इज 6 mark. थैंक यू स्टूडेंट्स. जदि किसी डाउट अच्छे आपण तुम मानकर यही टॉपिक उपरे तो तुम्हें मोर व्हाट्सएप नंबर 8895496848 रे कांटेक्ट करि परिबो. थैंक यू स्टूडेंट्स.